तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट आर द रोल्स इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमी एज वी नो इट इज डेवलपिंग कंट्री and it does not only produce the raw material but even provide the employment opportunity for the laborers, for workers in rural areas. Basically it contributes 17% of the total of the GDP. यदि अपने इंडिया में जीडीपी का ग्रोथ रेट है तो वो एग्रीकल्चर से भी बहुत इफेक्ट करता है, उसको हेल्प करता है कि जीडीपी मतलब इंक्रीज हो अगर हमारा एग्रीकल्चर बहुत सफिशिएंट लेवल पर है। और एग्रीकल्चर हमारा सफिशिएंट लेवल पर तब होगा व्हेन हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और कम से कम हम इम्पोर्ट करेंगे। सो दैट इज़ अ डेवलपमेंट, दैट इज़ अ स्मूथ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इन इंडियन इकोनॉमी। तो वी विल डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट। सो फर्स्ट इज व्हाट शेयर इन नेशनल इनकम। So as we know, during the first time of the during the first world war, so अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? हमारी 1914 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो इट कॉन्ट्रीब्यूट 2/3 ऑफ द नेशनल इनकम। अब उस टाइम पे ये 2/3 ऑफ द नेशनल इनकम क्यों कॉन्ट्रीब्यूट करता था? बिकॉज उस समय पर कोई भी मतलब कि इंडस्ट्रीज नहीं थी, कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। सब लोगों के पास में खेती बाड़ी थी तो सब लोग उसी में एंगेज होते थे, उसी में ही अपना एम्प्लॉयमेंट करते थे, उससे जो अर्निंग मिलती थी उससे अपना गुजारा करते थे। बट लेटर व्हाट हैपन, एज यू नो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हैज ग्रोन, एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज थी वो वहीं से फिर डाउन होना शुरू हो गई। बट अर्लियर इट वाजंट लाइक दैट। सो the share of the agriculture in national income is taken as a indicator of economic development. Now second one is what the provision of food surplus to the expanding population. हमको पता है जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन एक्सपांड होगी, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वी रिक्वायर द मोर फूड फॉर लेबर्स एंड एज वी नो इंडिया इज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे रैपिडली डिमांड जो है फूड की इंक्रीज होगी एंड वी रिक्वायर द फूड फॉर दैट। एंड और हमको सरप्लस लेबर्स के लिए हमको फूड ये सब कहाँ से मिलेगा? हमको एग्रीकल्चर से मिलेगा। तो फॉर दिस ऑल्सो हियर एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थर्ड वन इज द मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हमको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया की डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, और इसमें ऐसा बोला है कि मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट जब ही मैन्युफैक्चर होगा, जब ही प्रोसेसिंग में आएगा, जब उनको रॉ मटेरियल मिलेगा। और रॉ मटेरियल उनको कहाँ से मिलने वाला है? कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से। सो इट इज अ फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड लिंकेज for industrial development. So it plays a very significant role in this. And another point is that due to the spread of the green revolution, अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि जो इनकम है फार्मर्स की वो बढ़ रही है, और जब फार्मर्स की इनकम बढ़ रही है तो उनकी परचेसिंग पावर कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे उनकी परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी वो लोग क्या डिमांड करते हैं? मोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मोर इंडस्ट्रियल गुड्स। सो हियर ऑल्सो द रोल ऑफ द एग्रीकल्चर प्ले अ सिग्निफिकेंट। नाउ द फोर्थ वन इज द इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर गुड्स का इम्पोर्ट वी जस्ट डू ओनली 4 to 6%, लाइक वी जस्ट इम्पोर्ट वेरी फ्यू थिंग। एंड एक्सपोर्ट बल्कि हम बहुत ज़्यादा करते हैं उसका एक्सपोर्ट, लाइक मैंगो, टी, कॉफ़ी, cotton, spices and more, and it occupies an important position in the country's international trade. So it plays an important role in export also. Then we'll talk about the providing raw material to industries. So agriculture not only produce the raw material but even it provide the raw material to industries, like cash crops. Okay, so cash crops like cotton, paper, sugar, jute and all this. So for example it provide the raw material for the industries like the food processing industries, handloom industries, village and cottage industries and all. So these all industries are depend on the agriculture, because until and unless the agriculture will not provide the raw material to them, so they won't able to proceed, okay, and they won't able to manufacture that product. So this is for here also it plays important role. Seventh one, the agriculture is the largest provider of the employment. Yes, it is the largest source of the employment and livelihood, especially for the rural peoples. And besides the employment, actually
it provides employment in agricultural based industries. Agricultural based industries like the cotton industries, sugar industries, edible oil industries, and other employment opportunities which is lie in the agriculture, like storage, transportation, agriculture, and rural banking, exports. These are the what the employment opportunities is related to the agricultural sector, and which agriculture provides, and especially targeted for the rural areas, because खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा जो विलेज और जो रूरल एरियाज हो उन सब में ही ज़्यादा होती है और उनको ही बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है. So now here we have discussed what other roles. Now we will discuss about what are the issues in the field of the agriculture. So first we will discuss one by one. So first one is the productivity of the agriculture in India. So as we know, like India now actually produce self-sufficiency food. Self-sufficiency, that means you everyone know ना, अब खुद के लिए कम नहीं पड़ेगा, मतलब everyone will be satisfied, like कि सबके लिए available हो जाएगा self-sufficiency food. But the productivity of their farm is below than of the other countries. What are the other countries? Like I wanted to compare about it. See, the farm is below that of the Brazil, United States, France, and other nations. मतलब कि वो इंडिया जो है उनकी सिर्फ 1/3 प्रोड्यूस कर पाती है. किसकी कंपेयर कर? ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड अदर नेशंस. मतलब कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, बिकॉज दीज आर दी डेवलप्ड कंट्रीज इन इंडिया स्टिल इज अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री. एंड टॉकिंग अबाउट दी अनदर क्रॉप्स लाइक राइस प्रोडक्टिविटी इन इंडिया वाज जस्ट लेस देन हाफ ऑफ द चाइना. मतलब कि इसकी जस्ट आधी है राइस प्रोडक्टिविटी अपने इंडिया में. एंड और जो अदर स्टेपल्स है उनकी भी प्रोडक्टिविटी लो है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. अब इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? सो फर्स्ट रीज़न इज वॉट द इनइक्वालिटी ऑफ द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे यहाँ पे क्या होता है? इनइक्वालिटी ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, तो जिसके कारण से प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत इफेक्ट करता है, ठीक से नहीं हो पाया. सेकेंड इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी मीन्स हम लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. हम जो नई टेक्नोलॉजी है वो अडोप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, कि वो बेसिकली किसी को नॉलेज नहीं उस चीज़ के बारे में, तो काफ़ी एक्सपेंसिव आ रही है. तो इस तरह से हमारा क्या है कि दीज आर द बैरियर्स कि हमारा मतलब एग्रीकल्चर जो है, दीज आर इशूज़ की मतलब कि ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं हो पा रही है. एंड लैंडलेस कल्टिवेशन इज ऑल्सो द अनदर रीजन फॉर दिस थिंग. So now second thing we'll talk about, like second point is about cropping pattern. So cropping pattern, look, crop grown in India are divided into the two categories. First one is a food crop and another one is a cash crop. We know the food crops जो generally उनके जो price होते हैं बहुत low होते हैं, and cash crops के generally we know the cash crops is for the profit purpose, right? So उनके prices जो होते हैं बहुत high होते हैं. So talking about the food crops are wheat, rice, jowar, bajra, and all this. And the cash crops are like tobacco, groundnut, cotton, oil seeds, sugar canes, fibers, and all this. So basically, cash crops may you could increase the profit, because you will the prices of the cash crop would be the higher more than the food crop. Then the third point is the agricultural price policy. Agricultural price policy अपना इंडिया कौन सा फॉलो करता है? मतलब इसको दूसरे नाम से भी लोग जानते हैं. दैट इज वेरी फेमस. इट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम, राइट? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोक्योरमेंट प्राइस. सो जनरली MSP दैट मीन्स ये बहुत लो प्राइस में चार्ज करता है, एंड इट शुड बी फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द टाइम. MSP शुड बी फ्लक्चुएट. ऐसा नहीं कि एक बार जो डिसाइड कर दिया वो हो गया. नो, it should be fluctuate according to the time. And agricultural price policy, this policy offers some incentives or benefits to the producers for the production, but at the similar side it would be restricted to the farmers. मतलब ये incentives और ये benefits producers को तो provide करेगा production के लिए, but farmers के लिए वही चीज बहुत मतलब restricted रहेगी. तो ये किनका वो है. But suppose if there is a increase in MSP price, अगर MSP प्राइस जो है अगर उसमें बहुत इंक्रीज हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा? इट वुड रिजल्ट इन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑफ द इकोनॉमी. और इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑफ द इकोनॉमी होगा, दैट मीन्स उसके क्या होंगे? प्राइसेस जो है फूड इकोनॉमी के वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. और जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको लगता है कि रूरल पीपल और रूरल पुअर जो वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट. सो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा नॉर्मल फूड क्रॉप्स इन सब के लिए परचेस करने के लिए. एंड वी नो वी हैव अ बल्क ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, and that is the small marginal landless laborers or marginal farmers and all.
तो प्राइस एमएसपी का जो प्राइस है वो स्टेबलाइज होना चाहिए, ना वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है और उसके कारण प्राइसेस हाई बढ़ जाएंगे, उसके कारण हमारे जो रूरल पीपल्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर ये कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो इट शुड बी स्टेबलाइज एंड इट शुड बी फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू टाइम। इट शुड नॉट बी रिमेन सेम फॉर ऑल टाइम. Okay, now the fourth one is a public distribution system. So here public distribution system is what, like it is launched by central government, and it is subjected to certain limitations, like like it provide wheat and rice only but not other crops जो अपनी जैसे ज्वार बाजरा दालें हैं बहुत सारी वो सब भी आती है, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये सब प्रोवाइड नहीं होता है, सिर्फ वीट एंड राइस ही प्रोवाइड होता है इसके अंदर। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, इनसफिशिएंट कवरेज ऑफ रूरल एरियाज। हाँ, ये सारे रूरल एरियाज को कवर नहीं करता है, इट कवर ओनली फ्यू रूरल एरियाज और फ्यू दे लेफ्ट इट। ओके, एंड द इनएडुकेट कवरेज ऑफ द पीपल लाइन द बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब कि जो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन के जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं उन सबको कवरेज नहीं करता है ये पूरी तरीके से, कुछ को करता है कुछ को नहीं करता। और कुछ लोगों को जो पुअर्स होते हैं दोज कम्स अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, दे डोंट नो अबाउट देयर पॉलिसीज कि द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दिस पॉलिसी फॉर देम, और इफ दे नो इट दे डोंट नो द प्रोसीजर ऑफ इट। एंड द लास्ट थिंग इज दैट द करप्टेड एंड नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एज वी नो कि करप्शन के कारण क्या होता है, जैसे कि एक आपको बेसिक एग्जांपल देना चाहूंगी, मतलब कि जो रिसेंटली बहुत होता भी है आज के सिनेरियो में कि जो प्राइजेस हैं वीट, मतलब प्राइजेस नहीं, मतलब कि जो वीट है जो राइस है जो भी गवर्नमेंट भेजती है कि जो पुअर पीपल्स को मतलब कि उनको रीजनेबल प्राइस में उनको मिल जाए घर में। तो क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं, आई विल नॉट हाईलाइट इट बट यस सम करप्टेड लीडर्स, या सम करप्टेड लीडर्स जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट जो क्रॉप्स जो उनको देती है कि वो पब्लिक कि आपको पुअर पीपल को देना है, वो लोग उसको पुअर पीपल को ना देने की वजह वो क्या करते हैं, वो लोग उसको सेल करते हैं, मतलब कि उनको मतलब दुगने दाम में या फिर उनको मतलब सेल करके अपनी मतलब प्रॉफिट कमाते हैं। तो इससे क्या होता है कि दे आर अर्निंग प्रॉफिट, दे आर ऑलरेडी रिच, दे डोंट रिक्वायर ऑल दीज मटेरियल्स और दे रिक्वायर ऑल दीज क्रॉप्स एंड दे डोंट नीड इट। बट हियर द पुअर पीपल, those who are need of it, they couldn't able to get it because of these corrupted leaders. So this is also the one of the the barrier in this, and it will really ये public distribution system की efficiency को बहुत कम करता है। Now the fifth point is yes, condition of the agricultural labor। अब इसमें problems क्या क्या आती हैं condition of the agricultural labor में, surplus labor or disguised unemployment. These two are the major problems. Everyone knows what is disguised unemployment. Disguised unemployment जैसे कि आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि सपोज करो एक लैंड है जिसपे सिर्फ 3 लोगों का काम है, उस लैंड पे एग्रीकल्चर या फिर हमें कुछ काम करना है, तो स्मॉल पीस ऑफ द लैंड, उसमें सिर्फ 3 लोगों का काम है। लेकिन यहाँ पे 3 लोगों की काम की जगह उसमें कितने लोग लगे हुए हैं, उसमें 7 लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए। लेकिन जो 7 लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, उससे उस लैंड की प्रोडक्टिविटी या फिर उससे काम की प्रोडक्टिविटी तो होनी चाहिए, बिकॉज दीज 7 people we don't required, we just required only 3 people to work on this land. But here how many extra people are there working on the same land? Is 7 people. So that will not increase the productivity, and it will the effect of this thing, it will pushes the wage rate below the subsistence level। मतलब कि आपकी वेज रेट को भी एक मिनिमम लेवल से इसको कम कर देगा, जिसके कारण क्या है पुअर पीपल को और जो लोग काम करते हैं वहाँ पे उनको एक अफोर्डेबल वेज प्राइजेस नहीं मिल पाएंगे। तो that means like they won't able to survive it, right? Because it will create a problem for them. Now farmer suicides, the last factor is the farmer suicides। अब farmer suicides के रीजन बहुत जनरल है, हमको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचुरल फैक्टर। तो नेचुरल फैक्टर में क्या है, मानसून फेलियर हो जाना, मानसून फेलियर आ जाना, ड्रॉट फ्लड आ जाना, और उसके बाद में फ्लड ड्रॉट मानसून फेलियर, और देयर इज वन टर्म फ्रीक्वेंट एल नीनो इवेंट्स। frequent El Nino events, it is a kind of dry climate not having a moisture winds। अब इसमें क्या होता है कि कुछ अभी नो कि हमको क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वी रिक्वायर like there must be the ability of the fertile soil,
अच्छा वाटर होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर जितना रिक्वायर होता है 30-35 डिग्री से उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो भी ख़राब है, कम टेम्परेचर रहेगा तो भी ख़राब है, एक्सेस में अगर रेनफॉल हो गया, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो गया तो उनकी क्रॉप्स को फेलियर। तो कुछ मतलब कि कंडीशंस होती हैं, वो सब हमको मतलब देखना पड़ता है, तब जाके फार्मर्स उनको क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पाता है। किसी-किसी क्रॉप्स में हमको थोड़ी-सी मॉइस्चर, विंड्स और इन सब की भी नीड होती है। अगर हमको ये सब ना मिले उन क्रॉप के लिए, मतलब कि हमें ऑल व्हाट ऑल रिसोर्सेज वी रिक्वायर टू ग्रो दैट क्रॉप, इफ वी विल नॉट गेट, सो डेफिनेटली देयर विल बी अ decrement, or there will be the less productivity in their crop. And and अगर वो एक बार उनका क्रॉप अगर उनका ठीक से नहीं होगा या फिर वो नहीं ठीक से उसको ग्रो कर पाए, तो इससे क्या होगा, उनका बहुत सारी लॉसेस हो जाते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ farmers who say there is natural factor I have discussed just now. Now I will go, I will discuss economic factor. Economic factor is, as we know, that economic word, like money, related to money term. तो इकोनॉमिक में अपन बोले तो यहाँ पे फार्मर्स को क्या होता है कि उनके पास बहुत कम पैसा रहता है, दे हैव अ वेरी लेस फंड, और इफ दे आर और दे हैव वेरी लेस फंड, एंड सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू बोरो फ्रॉम द मनी लैंडर, राइट? They used to borrow from the money lender, they used to borrow from zamindars, and they used to charge a very high interest of the rate, which they couldn't able to pay back. तो इसके कारण क्या होता है कि मतलब कि ये लोग, मतलब उनको बहुत स्ट्रेस फील हो जाता है, मतलब स्ट्रेस इट मीन्स लाइक एक तो उनके पास फंड नहीं है, ऊपर से जब वो जिससे बोरो कर रहे हैं, जमींदार मनी लेंडर्स, इन सब दे चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट व्हिच दे couldn't able to afford it. So instead of they must borrow from the organized sector, like banking system, right? They should not borrow from the unorganized sector. This is what the unorganized sector they used to borrow. Now social factor is what the social factor is, like farmers from the rural areas having big families. They have very big families, and all these big families depend on the small farmland. बहुत उनकी बड़ी फैमिली होती है, फैमिली में 4-5 नहीं, मतलब काफ़ी लोग होते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं इनके, तो दैट मीन्स दे ऑलरेडी हैव अ वेरी बिग फैमिलीज, एंड दे ऑल डिपेंड ऑन द स्मॉल फार्मलैंड। सबके ये सब स्मॉल फार्मलैंड पे डिपेंड करते हैं, सो दैट विल लीड टू द इकोनॉमिक बर्डन फॉर दैट फार्मर, बिकॉज वो वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है कि वो, मतलब कि इतनी बिग फैमिली को ठीक से फूड फीड कर पाए, या फिर अच्छे से मतलब वो लोग सर्वाइव कर पाए, नॉर्मल बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं अपनी, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, वो सब कर पाए, तो इसके कारण वो लोग थोड़ा सा और डिप्रेस फील करते हैं ना। पॉलिसी पैरालिसिस, so policy paralysis, that means not getting sufficient subsidy on fertilizers and basic input of the agricultures. तो फर्टिलाइजर्स ये सारी महंगी आती है, अगर इन पे प्रॉपर सब्सिडीज ना मिली तो इट वुड बिकम क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स टू ग्रो इट वेल. नाउ and some other personal issues, it may be illness, or some farmers have very alcohol addiction or stress, or there are some family responsibilities. So these what all are the issues and rules I have discussed with you. So yes, this is what. Thank you.